Good afternoon, everyone. My name is Pooja Vankade, and we are conducting this subject, that is production and operation management, in which we have already completed 2 units, that is the nature and scope of production and operation management, and the second unit is facility location and capacity planning. Okay, and we have already started unit 3, in which we have completed first part, that is material management, and we have already started material handling part, in which we have taken many things like principle of material handling, equipments required for material handling, then we have taken 5 years, then Kaizen, Kanban, and in today's lecture we are going to learn about poka yoke. What is meant by poka yoke? Okay, so let's get started with the introduction. What is a poka yoke? Okay, Shijio Shinjo defined poka yoke as poka means inadvertent mistake that anyone can make. Okay, Shijio Shingo is the person. He is the person who coined this concept of poka yoke. He told that poka means what? Inadvertent mistake that anyone can make. म्हणजे means ऐसी कोई mistake जो हर कोई करता है उसे हम पोका कहते हैं. And yoke to prevent or proof, जो हम मिस्टेक कर रहे हैं उसको हमें प्रूफ करना है तो उसे हम क्या कहते हैं? योके. सो पोका योके मीन्स मिस्टेक प्रूफिंग और मिस्टेक प्रिवेंटिंग. ओके, पोका योके is a tool to have zero defects and even reduce or eliminate quality control. Okay, poka yoke, it is a tool. It is a tool which we will include in Toyota production system. Poka yoke is a tool to have zero defects and even reduce or eliminate quality control. Poka yoke is a Japanese name for fool proofing. Okay, fool proofing. पोका योके का जो है ये है जापानीज वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है? फुल प्रूफिंग. पोका योके रिप्रेजेंट द इंटेलिजेंस ऑफ द ऑपरेटर by excluding repetitive actions that require a thinking process. पोका योके represent the intelligence of the operator. Whoever the operator is, it represent its intelligence by excluding repetitive actions. means एक ही एक्शन बार बार ना कंटिन्यू करते हुए जो रिक्वायर्ड एक्शन है वही उन्होंने कंडक्ट करनी चाहिए. दैट रिक्वायर अ थिंकिंग प्रोसेस. ओके, so going further, mistake proofing, as we have learnt about poka yoke is a mistake proofing technique. So what is meant by mistake proofing? Mistake proofing a product's design and its manufacturing process is a key element of design for manufacturability and assembly. Okay, making a mistake proof a product design and its manufacturing processes means what? Whenever we are designing products design, that time we need to be more conscious about the design and manufacturing processes so that it can be mistake proof. It is a key element of design for manufacturability and assembly. Okay, mistake proofing is also a key element of improving product quality and reliability. Okay, factors contribute to mistake proofing are attention, perception, memory, and logical reasoning. Okay, going further, what are the principles of mistake proofing? There are 6 mistake proofing principles or methods. Okay, what are these 6 mistake proofing methods or principles? The very first method is elimination. 6 to eliminate the possibility of errors by redesigning the product or process so that the task or part is no longer necessary. Elimination is what? Elimination seeks to eliminate the possibility of error. Elimination seeks to eliminate the possibility of error by redesigning the product or process so that the task or part is no longer necessary. अभी देखो क्या करते हैं हम, जब हम डिज़ाइन बनाते हैं हम क्या करते हैं? बार बार वो डिज़ाइन को प्रूफिंग करते हैं कि मतलब that it will not going to affect our productivity. Okay, replacement. The second principle is replacement. Substitutes a more reliable process to improve consistency. Okay, अभी देखो रिप्लेसमेंट मीन्स व्हाट? विदाउट ओके, और कोई जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसके जगह के पे अगर दूसरी कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो इट विल गिव अस अ गुड क्वालिटी रिजल्ट, देन इट विल बी अ गुड रिप्लेसमेंट. ओके, देन प्रिवेंटेशन. इंजीनियर्स द प्रोडक्ट और प्रोसेस so that it is impossible to make a mistake at all. Prevention engineers prevention engineers जो है वो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट और प्रोसेस को इस तरह से बना रहे हैं कि उसमें कम से कम
वहाँ पे मिस्टेक्स आनी चाहिए, मीन्स वो पहले ही प्रिकॉशंस ले रहे हैं, प्रिवेंटेशन कर ले रहे हैं. फैसिलेशन एम्प्लॉयज टेक्निक एंड कंबाइनिंग स्टेप्स टू मेक वर्क इजियर टू परफॉर्म. ओके, अभी क्या करना है, जो एम्प्लॉयज है उन लोगों को कंबाइन करके हमें क्या करना है, वर्क परफॉर्म करना है, सो दैट इट विल बी continued easily. Okay, detection involves identifying an error before further processing occurs, so that the user can quickly correct the problem. Okay, whatever the problem is there, we need to detect it before the further process is conducted, so that our time will be saved and our material will be saved. Okay, then mitigation seeks to minimize the effect of errors. Okay, means अगर कोई error आ भी रहा है तो उसका effect जो है वो कम करेगा कौन, mitigation. These are the principles of mistake proofing. Going further, 2 status and 3 functions of poka yoke. Okay, there are 2 status and 3 functions of poka yoke. Okay, what are the status? The very first status is the fault will happen, means गलती होने वाली है, और the fault has happened, और गलती हो चुकी है. ठीक है, these are two status, means क्या है कि देखो गलती होने वाली है या फिर गलती हो चुकी है. दिस आर 2 स्टेटस. एंड व्हाट आर द फंक्शन, वी नीड टू स्टॉप, मीन्स अगर गलती होने वाली है तो वी नीड टू स्टॉप देयर. Okay, or check it means we will continuously check whether there will be any fault or there will be any error. Or alarm means we will going to alarm, or we will going to tell others about the mistakes that will going to happen. These are the 2 status and 3 functions of poka yoke. Going further, 3 strategies for zero defect. Okay, as we know that poka yoke means mistake proofing, or we will get a zero defect from poka yoke. What are the 3 strategies that are applicable for getting a zero defect? Only make the product when required, means what कि जब जरूरत है तभी टाइम हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, ना कि उसे पहले से ही बना के स्टॉक करके रखना है. वी नीड टू प्रोड्यूस इट व्हेन द रिक्वायरमेंट इज देयर. ओके, अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स डिमांड और अकॉर्डिंग टू द मार्केट सर्वे वी नीड टू प्रोड्यूस देम प्रोडक्ट. ओके, मेक द प्रोडक्ट सो इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनीथिंग एल्स. ओके, ऐसा प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए कि जो दूसरी चीजों के लिए यूज ना हो, सिर्फ जो काम के लिए हमने उसे बनाया है उसी के लिए वो 100% यूज होना चाहिए. इफ द प्रोडक्ट इज रेडी, यूज इट इमीडिएटली. मीन्स हमें क्या करना है, प्रोडक्ट अगर रेडी है तो उसको इमीडिएटली हमें क्या करना है, यूज करना है, ना कि उसे रख देना है एंड आफ्टरवर्ड्स जब रिक्वायरमेंट आएगी तब हमें उसे यूज करना है. गोइंग फर्दर, पोका योके क्लासिफिकेशन. पोका योके क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. दीज आर द 2 types of poka yoke, that is server poka yoke and customer poka yoke. Server poka yoke consists of the circle, that is task, tangibles and treatment. These are the things that will happen in server poka yoke. And in customer poka yoke, preparation, encounter and resolution. Preparation means whatever the amount of product we are producing and we encounter any problem, then we find a solution for that. Okay, so these are the 2 poka yoke classification, that is servers poka yoke and customers poka yoke. Okay, provider or server's errors. What are the providers or server errors? The very first error is task error. Task error means doing the work incorrectly, means whatever the command we are giving, it is not following the same command, it will be doing some other works. Okay, then doing work not requested, में जो हमने काम बोला है वो काम ना करते हुए कुछ अलग ही काम करना है, तो उसको टास्क एरर हम कह सकते हैं. डूइंग वर्क इन द रॉन्ग ऑर्डर, मीन्स हमने अगर पहला कोई टास्क बताया है एंड सेकेंड टाइम कोई टास्क बताया तो सेकेंड टास्क पहले करना या फर्स्ट टास्क सेकेंड करना is a type of task error. Then doing work too slowly. These are the task errors which will come in the picture when server errors are considered. Then treatment errors, not acknowledging the customer. Treatment error means what? They are not acknowledging customers. Okay, it will be a treatment error. Then not listening to the customer. Whatever the customer is complaining or saying, we are not listening it. It is a treatment error. Then not reacting appropriately to the customers means whatever the customer is demanding or whatever the customer is saying, we need to act properly on whatever he or she is telling to us. Okay, not reacting appropriately to the customer is one of the treatment error. Going further, tangible errors. What are these tangible errors? As we have studied that the server poka yoke consists of 3 types of error: task errors,
treatment errors and tangible error, out of which we have considered task error, treatment error, and what is tangible error. Failure to clean facilities means whatever the facilities we are having, we are not clean it, then it will consider in a tangible errors. Then failure to control noise means whatever the machinery we are using, it will be making noise, it will be a failure of tangible error. Okay, going further, customer error. Customer error, as we have studied that customer poka yoke consists of preparation error, encounter error and resolution. What are these three errors that we will going to discuss now? Customer error. Customer error firstly consists of preparation error. What are this preparation error? Failure to bring necessary material to the encounter means what कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए कोई नेसेसरी हमें मटेरियल की आवश्यकता है, बट वो सेम मटेरियल ना मिलते हुए कोई अलग ही मटेरियल आ जाए तो उसे प्रिपरेशन एरर कह सकते हैं. देन फेल्यूर टू एंगेज द करेक्ट सर्विस मीन्स वॉट एवर द सर्विस दैट वी रिक्वायर्ड इट विल बी फेल्ड टू गिव द सर्विस. ओके, देन गोइंग फर्दर एनकाउंटर एरर. व्हाट आर दिस एनकाउंटर एरर? फेल्यूर टू रिमेंबर स्टेप्स इन द सर्विस प्रोसेस. वॉट एवर द सर्विस प्रोसेस वी हैव फेल्ड और doesn't remember the process or steps, then it will be come into encounter errors. Then failure to follow system flow means we have decided, or we have already decided the system flow means one after another whatever the operations will going to perform, that I have already decided, but system is not following the same sequence, that it will be come in the picture of encounter error. Then failure to follow instructions. Okay, this will also come in consideration with encounter error. Resolution errors. Failure to learn from experience. Resolution errors means whatever the failures are happening, we have not learned from that experience, then it will come in the picture of resolution error. Then failure to adjust expectation appropriately, this will also come in consideration of resolution error. These are the customer errors that we have studied. Then what are the 7 steps to poka yoke attainment? Okay, what are these necessary 7 steps to implement poka yoke? That is quality process. Okay, as we have studied, quality means we need to consider quality from raw material to finished product. Okay, utilize a team environment, always work in team environment. Okay, elimination of errors. Whatever the error is coming at any stage, we need to eliminate that error on that stage only. Eliminate the root cause of the error. We just don't want to eliminate the error, we want to know the root cause of that error, and we need to eliminate that root cause of the error. Do it right the first टाइम मीन्स पहले ही जब हम काम करते हैं, मतलब हमें पहले ही जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं वही टाइम हमें राइट क्वालिटी राइट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, ना कि उसे हमें बार बार उसको हमें क्या करना है, अच्छे से बनाना है या उसके जो भी मिस्टेक्स है उसको एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड डिसीजंस मीन्स जो कोई भी डिसीजंस और जो कोई भी चीज़ है हमारे प्रोडक्ट में किसी तरह का वैल्यू एडिशन कर नहीं रही है तो उनको हमें एलिमिनेट करना है. इम्प्लीमेंट द कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट अप्रोच. ओके, वी शुड constantly search for improvement and approach. These are the 7 steps to poka yoke attainment. What is poka yoke approach? It consists of 2 approaches, that is proactive approach and secondary reactive approach. What is the proactive approach? A fully implement zero defect quality system requires poka yoke usage at or before the inspection points during the process. Okay, a fully implemented zero defect quality system means जो सिस्टम है उसने यहाँ पे देखो fully implemented zero defect quality system जो है उसने implement की है, requires poka yoke usage at or before inspection point. मीन जहाँ पे inspection points है वहाँ पे हमें चेक करना है फॉर जीरो डिफेक्ट, और जो इंस्पेक्शन पॉइंट है उससे पहले हमें चेक करना है ड्यूरिंग द प्रोसेस. ओके, पोका योके विल कैच द एरर्स बिफोर अ डिफेक्टिव पार्ट इज मैन्युफैक्चर्ड 100% ऑफ द टाइम. पोका योके क्या करता है कि 100% डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने से पहले ही जो मिस्टेक्स हो रही है तो उसे सर्च करके वो क्या करेगा, एनर्जी वहाँ पे सेव कर सकता है. रिएक्टिव अप्रोच मीन्स व्हाट? चेक अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसेस. ओके, चेक अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसेस मीन्स काम होने के बाद तो तुरंत ही रिजल्ट के लिए सोचना है. कैन बी एन ऑपरेटर चेक एट द प्रोसेस और सक्सेसिव चेक एट द next process. Okay, not 100% effective will not eliminate all defects. This will not going to eliminate all 100% of defect. Effective in preventing defects from being passed in next process. Okay,
Going further, two poka-yoke system approach are utilized in manufacturing, which lead to successful zero defect. Okay, what are these two? Poka-yoke system approaches that we will going to implement so that we will get a successful zero defect quality? Is first is control approach. What is meant by control approach? Shuts down the process when an error occurs. Means whenever there is an error, we need to shut down the process. Whatever the process we are conducting, we need to stop down that. Okay, keeps the suspect part in place when an operation is incomplete. मतलब अगर वहाँ पे ऑपरेशन हो नहीं पा रहा है, ऐसे जो सस्पेक्टेड जो पार्ट रहते हैं उन्हें हमें क्या करना है, वैसे ही प्लेस पे रखना है in order to complete it. Then warning approach consists of signals the operator to stop the process and correct the problems. Okay, warning approach consists of we need to tell or signal the operator to stop the process and correct the problems. Okay, going further, what is the control system? Takes human element out of the equation, does not depend on an operator or assembly. Control system, it is an automatic system, it will not consider any human in it, has a high capability of achieving zero defects. Okay, control system, as there is no human involvement, it is a machinery, then it will achieve a zero defects. Machine stops when an irregularity is detected. Means some irregularity or some fault is detected, then machinery will definitely going to stop. Okay, going further, warning system. What is meant by warning system? Sometimes an automatic shut off system is not an option. मीन्स ऑटोमेटिकली क्या होता है, शट डाउन हो जाता है अगर कोई एरर अकर हो रहा है, तो इट इज नॉट एन ऑप्शन. अ वार्निंग एंड और अलार्म सिस्टम कैन बी यूज टू गेट एन ऑपरेशन ऑपरेटर्स अटेंशन. ओके, तो डायरेक्टली मशीनरी स्टॉप ना करते हुए हमें सबसे पहले क्या है, वहाँ पे एक अलार्म या फिर अटेंशन मिलना चाहिए. कलर कोडिंग इज ऑल्सो एन इफेक्टिव नॉट ऑटोमेटिक ऑप्शन. Opinions. Okay, 10 types of human mistake. What are the 10 types of human mistake that we do in our day to day life? That is forgetfulness, मिस हम कोई चीजें भूल जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, मीन्स गलत चीजें कंडक्ट करना, देन लैक ऑफ एक्सपीरियंस, willful means ignoring rules or procedure, then inadvertent or sloppiness, then slowness, then lack of standardization, surprise means unexpected machine operation, and intentional means sabotage. Okay, these are the 10 types of human mistake that we are conducting in our day to day life. Okay, then what are these poka-yoke devices? Poka-yoke is implemented by using simple object like fixture jigs. ओके, सो हम पोका-योके कौन से चीज़ों से हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. तो उसमें देखो सिंपल जो हम हमारे डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं तो हम वो यूज़ करते हैं. जैसे देखो फिक्सचर जिग्स हो गए, देन वार्निंग डिवाइसेस एंड द लाइक टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कमिटिंग मिस्टेक्स इवन इफ दे आर ट्राई टू डू. बस अगर कोई गलती हो रही है तो तभी हमें क्या मिलता है, वार्निंग डिवाइस से सिग्नल मिलता है सो दैट वी कैन नॉट कंटिन्यू द प्रोसेस. द मेन फीचर ऑफ पोका-योके डिवाइस इज देयर एक्सेप्शनल suitability for reducing or eliminating defects through effective feedback and instantaneous corrective action. Okay, the main feature of poka-yoke is their exceptional suitability for reducing or eliminating defects. Okay, then going further, these devices are capable of being used all the time by all workers, simple and usually installed with low implementation cost. means यहाँ पे cost भी जो है वो low है. poka-yoke devices help eliminate errors and defects by giving machine the intelligence to stop and signal when a error occurs. Okay, poka-yoke device stop machines and alert co-workers or workers when a problem exists. If there is a problem, then poka-yoke device will going to stop automatically. Okay, then the 3 levels of poka-yoke. Okay, what are these 3 levels of poka-yoke? Then there are 3 levels at which your company can affect poka-yoke, that is eliminating error, defects and losses at the source or prevention of a mistake from being committed. means mistake commit करने से पहले ही उसे रोकना है. ठीक है, then second, detection of a loss or mistake it occurs, allowing correction before it comes to a problem. means second stage में हम क्या करते हैं, डिटेक्ट हो जाता है कि ये मिस्टेक हो रही है,
एंड वो मिस्टेक से फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले हम क्या करते हैं, उसको वो मिस्टेक जो है उसको करेक्ट करते हैं. देन थर्ड इज डिटेक्शन ऑफ अ लॉस और मिस्टेक्स आफ्टर इट हैज अकर्ड जस्ट इन टाइम बिफोर इट ब्लोज अप इनटू अ मेजर इशू. मीन्स व्हाट कि अभी क्या होता है, थर्ड इसमें क्या होता है कि आपका पूरा मटेरियल बन जाता है, बट जब वो मेजर इशू में कन्वर्ट होने से पहले हमें वो मिस्टेक्स पता चल जाती है, देन इट विल कम इन कंसिडरेशन ऑफ थर्ड लेवल. ओके, एग्जांपल्स ऑफ पोका योके प्रोडक्ट्स. As you can see that this is a screwdriver can sleep and scratch surfaces. Screwdriver can't sleep and scratch surfaces means what कि देखो अभी क्या होता है कि जो स्क्रू ड्राइवर्स है, तो देखो फर्स्ट पिक्चर में जो स्क्रू ड्राइवर का जो ये दिखाया है, तो इट इज अ लॉन्ग पार्ट एंड वी कैन use that as a screwdriver and it can scratch anything or any surfaces. Okay, but in second picture whatever the screwdriver we have used, it will not going to scratch any device. Okay, going further, मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इसमें मिस्टेक हो रही है, सेकंड इसमें हम मिस्टेक होने से पहले उसको रिड्यूस कर रहे हैं. देन अदर डिवाइसेस आर एज यू कैन सी फ्लॉपी डिस्क इज देयर, देन वी विल गोइंग टू सी द ATM. ओके, so these are the things that we have already studied in today's lecture, that is all about poka yoke system. In next lecture we are going to learn about Toyota production system and line balancing problems. Okay, thank you for listening. For any doubts you can contact me on WhatsApp or on call. Okay, thank you.